this is our brain tears question. Okay, the first one is objective type question था, but I am giving explanation of that objective type questions. A, the additive inverse of -3/4 is. What do you mean by additive inverse? Additive inverse किसे कहते हैं कि वैसा नंबर जिसको ऐड करने के बाद वो जीरो हो जाए, that is said to be additive inverse. जैसे 4 एक नंबर है, राइट? 4 में हम क्या ऐड करेंगे कि जीरो हो जाएगा? वी नो कि 4 में हम -4 ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम्स जीरो. तो 4 का एडिटिव इनवर्स -4. सिंपली एडिटिव इनवर्स मीन्स इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. -3/4 का निगेटिव क्या होगा? माइनस को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स पॉजिटिव. सो -3/4 का एडिटिव इनवर्स 3/4 होगा. व्हाट इज 3/4? अगर क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4, 3/4 का एडिटिव इनवर्स, देन यू कैन से -3/4. अब -3/4 का 3/4. अंडरस्टूड? सो करेक्ट ऑप्शन इज 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y + z, x + y + z. दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हम बताए थे. विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज दिस? कम्युलेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव? दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट? दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, x + y + z. याद होगा ना, सब्ट्रैक्शन का होल्ड नहीं करता है, एडिशन का होल्ड करता है. मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है बट डिवीजन में होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं करता है. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 7/12 डिवाइड बाय -7/12. 7/12 को डिवाइड करना है -7/12. तो ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर में हम लोग डिवीजन पढ़ चुके हैं. डिवीजन इज नथिंग, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर रेशनल नंबर. मतलब डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में. कब? जब ये रेशनल नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है राइट साइड में, दैट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मतलब ऐसे हो जाएगा, इट विल बी 12/-7. सो 12 कैंसिल, 7 7, इट विल बी 1/-1. और 1/-1 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -1. सो यू राइट ऑप्शन इज -1. Next question, identity element for subtraction. We know that identity element for addition is 0. Identity element for subtraction does not exist. Understood? Identity element of multiplication is 1, but identity of element of division does not exist. याद रहेगा? Identity element for subtraction. अब क्या लिखोगे? Does not exist. Does not exist. होता ही नहीं. सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, एडिशन का 0 होता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन ई. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज ई, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर. What do you mean by multiplicative inverse? पहले इस पर डिस्कशन थोड़ा कर ले. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डिफाइन क्या था? डू यू नो स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डिफाइन हम याद करने के लिए बोले थे नोटबुक में, राइट? लिखने के लिए बोले थे डिफाइन. तो इट इज नथिंग, इट इज द ओनली द रेसिप्रोकल. ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स इसका रेसिप्रोकल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिक्स फ्रैक्शन को 6 होल 1/3 को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. इट विल बी 6 into 3 18 + 1 19/3. अब ये 19/3 जो रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सो
multiplicative inverse means the reciprocal. Denominator is in numerator and numerator is in denominator only. Okay. Good morning. This is the solution of chapter 2 of brain teasers. This is our chapter 2. Okay. Chapter 2 का brain teasers है. The question is B. The first question A. Write all rational numbers whose absolute value is 5 by 9. सभी रेशनल नंबर को लिखना है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 by 9 होता है. वी नो दैट कोई भी निगेटिव पॉजिटिव सभी रेशनल नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव. न्यूमेरिकली कोई चेंज नहीं होता है. ओनली द साइन विल बी पॉजिटिव. ओके. सो वी कैन से -5 by 9 इज वन ऑफ द रेशनल नंबर whose absolute value is 5 by 9. क्योंकि जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे इट बिकम्स 5 by 9. वी कैन से 5 by -9. इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 by 9 होगा क्योंकि नेगेटिव हट के पॉजिटिव हो जाएगा. नेक्स्ट वन. वी नो दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इज आल्सो पॉजिटिव. वी कैन आल्सो से -5 by -9. Okay. These are our four rational numbers whose absolute value is 5 by 9. The next question is B, in which we have to find the reciprocal of certain given rational numbers. 4 by 5 into 3 by -8. First of all, we have to solve this. Okay, solve it. 4 into 3. Product में numerator will be producted multiplied by numerator. 4 into 3 it will be 12. 5 into -8 it is -40. Next one. Both are divisible by 4. So divide 4. It becomes 3 by -10. Okay, this is our rational numbers. Now we have to find the reciprocal. We have to find the reciprocal of 3 by -10. बताइए रेसिप्रोकल में क्या होता है. कोई भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल न्यूमरेटर will be in denominator and denominator becomes numerator in the reciprocal. Okay, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो व्हाट इज डिनोमिनेटर -10. -10 न्यूमरेटर में चल जाएगा and the numerator will be in denominator. This is our -10 by 3 is the reciprocal of 3 by -10. Next one is what should be added to -5 by 11. -5 by 11 is a rational number और -5 by 11 में हमें क्या ऐड करेंगे that we get 26 by 33. तो ऐसे केस में we suppose let x will be added. Let the number will be added with x. Let number which will be added is x. Okay, मान लीजिए कि वो नंबर क्या है x है. ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो लेट द नंबर बी x ओनली. ओके. -5 by 11 में हम x ऐड कर देंगे देन वी गेट 26 by 33. नाउ लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 6 में पढ़े हो. -5 by 11 में x ऐड करेंगे देन वी गेट 26 by 33. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हाउ? x is equal to 26 by 33. This rational number is in negative. Left side में negative है -5 by 11. जब वो right side में गया then it becomes 5 by 11. Right? We have to solve this. What is the LCM? 33, right? 33 and 11 का LCM 33. ये तो बताना नहीं पड़ेगा. 1 times it will be 26 plus 3 times 15.
26 plus 15, 41 by 33. So our x will be 41 by 33. Understood? Our next question, in which we have to subtract this rational number. This rational number को हमें subtract करना है from किससे? From the sum of that two. Means सबसे पहले हमें ये दोनों रेशनल नंबर का सम करना है. We have to find the sum first of all. किसका सम? -3/7 and 2 means -3/7 and 2 का sum. We have to find the sum. Okay, then this is 1. Find the LCM. What is the LCM? 7. How many times? 1. Then it becomes -3. 7 times 7 to 14. Then -3 plus 14. What we have? 11. 11 by 7. Right? Now we have to subtract this from. इसमें से subtract करना है. Means we have to subtract 6 whole 2 by 3 from 11 by 7. Means 11 by 7 को पहले लिखेंगे -6 whole 2 by 3. Okay. Next one. एक फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है. 11 by 7 minus 6 3 18 plus 2 20 by 3. Now what is the LCM of 7 and 3? 7 और 3 का LCM क्या होगा? It will be 21. Solve it. You can easily solve it this. Okay. Subtraction जान चुके हो? You can simply solve yourself. 7 3 times. 3 into 11 33 minus 3 7 times 7 into 20 140. Now 33 minus 140. 140 बड़ा है and its sign is negative. So our whole result will be negative. 140 में से 33 जाएगा. It will be 107 by 21. Okay. This is our answer. The last question E. Find the value of. Simply simplify करना है इसे हम. इसका वैल्यू फाइंड करना है. First of all, write 1 plus 1 by 1 plus 1 by 6. We have to solve the denominator first of all. इस denominator को हम solve करेंगे. It will be 1 by 1. Okay. 1 plus 1 by. Solve this. What is the LCM? 6. 6 times plus 1. Now, what we have in the denominator? This is 1 plus numerator is 1 and it will be 7 by 6. Now, what is the sign of this? This is division. अगर कोई लिखता है 1 by 5 means 1 divide 5. Understood? तो 1 by 7 by 6 means division. 1 divide 7 by 6. जब इसको इंटरचेंज करेंगे we get 1 plus 1 is in numerator. जो denominator जो सबसे नीचे है which will go in numerator and 7 will be in denominator. Understood? एक कन्वर्जन ध्यान दीजिएगा. 7 by 6. 6 जो सबसे नीचे है which will go in the numerator and 7 is in denominator. Now we have 1 plus 6 by 7. Now solve this. LCM is 7. 7 times plus 6. 13 by 7. This is our solution. This is our value. Okay. Final result is 13 by 7. Okay. This is our question number 2 of BT chapter 2. This is a statement, given a statement. First of all, you have to justify this is true or false. सबसे पहले हमें बताना है कि क्या है, true है या false है. If it is false, then give one example. Okay? एक example देकर हमें पता लगाना है. अगर ये false है तो prove it. If modulus x is 0,
अगर कोई नंबर का रेशनल नंबर मॉडुलस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगा, देन x हैज नो रेसिप्रोकल। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? व्हाट डू मीन बाय रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मींस reciprocal of x what? Reciprocal of x equal to 1 by x, right? x का रेसिप्रोकल 1 by x होगा, जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1 by 5, 3 का रेसिप्रोकल 1 by 3. तो this is 0 means the numerical value of this x is 0, but we know that denominator never becomes 0 for a rational number, right? So we can say if modulus absolute value या modulus x is 0, then x has no reciprocal, right? Okay, true. This is true. अगर ये true है, justify करने की आवश्यकता नहीं है. On the right, true, because x never be in denominator. That's why we can say x has no reciprocal. Okay. Next statement is true. If x is less than y means कोई भी x और y दो नंबर्स हैं जिसमें y is greater, then क्या modulus y means absolute value of y is greater than absolute value of x? Is it always true? False. Give one example. Suppose that take x is equal to minus 10 and y is equal to 5. Then tell me which is greater, minus 10 or 5? We know that positive is always greater than a negative, so we can say, right? y हम 5 सपोज किए, x हम -10 सपोज किए. Then tell me about x. अगर हम x एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं मींस -10 मींस 10, y एब्सोल्यूट वैल्यू मींस 5 मींस 5. Now tell me, which is greater, 10 or 5? We know that 10 is greater, but in the question it is given y is greater, absolute value of y is greater, so it will be false. Example समझ में आया? अपनी नोटबुक पे give one example. Suppose x is equal to -10, y is equal to 5, then y is greater than -10, but absolute value of x is 10, but absolute value of y is 5, but here 10 is greater than 5, but in question y absolute value of y is greater than x, so it will be false. है ना? एग्जांपल से हम समझा चुके हैं आपको. In the next statement we have x is less than y means suppose two numbers, दो नंबर ऐसा लो जिसमें y बड़ा है x का. कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर, y 5 ले लो तो x आप 4 ले लो. तो क्या x रेसिप्रोकल और y रेसिप्रोकल में y रेसिप्रोकल बड़ा होगा? Means if y is greater then y reciprocal is also greater. Let one example. Let x is equal to 5 and y is equal to 10, right? We can say 5 is less than 10 means 10 is greater than 5. Then what is our x reciprocal? X reciprocal means 5 reciprocal means 1 by 5, right? This is our. What is y reciprocal? Y reciprocal means y is 10 माने हैं, 10 का reciprocal means 1 by 10. Now tell me about that two numbers. Which is greater, 1 by 5 or 1 by 10? Comparing हम बता चुके हैं, है ना? This is general question. 10 is greater than 5, but reciprocal में कौन बड़ा है, 1 by 10 और 1 by 5? Comparing करने का तरीका क्या है? Cross multiplication, 1 into 10. And this is 5 into 1. So 10 is greater, means 1 by 5 is greater than 1 by 10. But in the question, it is given that y reciprocal means 1 by 10 reciprocal is greater. So क्या दिख रहा है? It is false again. And we have given one example. Okay.
एग्जाम्पल समझ में आया? 1/10 और 1/5 में कौन बड़ा है? 1/5. 1/5 इज ग्रेटर, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा था? y रेसिप्रोकल ग्रेटर. ओके. Next statement we have negative of a negative rational number is positive. Is it true or false? Negative rational number का negative means let one example. एक rational number suppose करो, rational number कोई भी लेकिन negative होना चाहिए. Negative of a negative rational number. कोई example बताइए. -3/5. This is negative, right? The negative of this rational number. Now tell me, negative of -3/5 क्या होगा? नेगेटिव का मतलब -3/5, राइट? नेगेटिव मीन्स माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 3/5. इट इज पॉजिटिव, राइट? मीन्स नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव. ओके, दिस इज positive, so it is true. Okay, it is true. Now write this example. Yeah, और भी कोई example in your book? Next statement we have product of two rational number. दो rational number का product can never be an integer. क्या वो integer नहीं होता है? We are taking here two examples. Okay, first example, दो रेशनल नंबर ले लो. सपोज दैट 5 is a rational number or not? 5 is a rational number. Yes. 4 is a rational number. Product of rational number is 20, and 20 is also integers. है ना integers? So it is false. Right? Never बोल रहा था. That's why it is false. One more example. कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 3/7 is a rational number and 7/3 is a rational number. What is the product? 21/21, which is equal to 1. But 1 is integer. 1 is integer. So the question is telling it is never be an integer, can never be an integer, but we can find integer, so it is false. Next statement is product of two integers is never a fraction. दो integers का product कभी fraction नहीं होता है. I think this is right, है ना? One example, 5 into -4. दोनों integers है, both are integers, and it will be -20. But -20 is not a fraction. One more example, 3 into 2. This is 6. 3 and 2 are integers, but 6 is also integer. It is not a fraction. Fraction means part of whole. कोई भी whole means कोई भी whole का एक part. Okay? Next question is, next statement is, if x is greater than y, x and y are two rational numbers such that x is greater than y. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. दो रेशनल नंबर जिसमें x is greater than y. Let x is equal to 10 and y is equal to 3. Both are rational number. कोई डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं लिए because integers are also a rational number. So then x minus y. X minus y, which is 10 minus 3, that is 7. 7 is positive or negative? It is positive. Okay, it is positive. So we can say it is always true. Right? Our next question is question number 3, in which we have to insert one rational number between that two. ये दो गिवन एक्सप्रेशन से जो वैल्यू फाइंड होगा रेशनल नंबर, उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस.
x plus y. What is x? 3 by 4 plus what is y? Minus 9 by 8. Now, what is the LCM of 4 and 8? This is 8. How many times? 2 times 3 into 6 plus. Now, 8 denominator में है, 8 LCM है. That's why it will be minus 9. Okay? So, it becomes 6 and minus 9. It will be minus 3 by 8. Okay? And in every expression, here is minus 1 power. Means what? X plus y minus 1 power means reciprocal of that number. So what is the reciprocal? It will be 8 by minus 3, but this is not in a standard form. So 8 by minus 3 को standard form में जब change करेंगे, it will be minus 8 by 3. Understood? Next expression is reciprocal of x and the y and the sum. X means 3 by 4 and it's the reciprocal plus minus 9 by 8 and the reciprocal. Okay, so what is 3 by 4? 4 by 3 plus 8 by minus 9. Now this is not in a standard form. So जब भी ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना इट इज वेरी नेसेसरी. ओके, सो इसको, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है? नेगेटिव है. माइनस 9 डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव है, तो इसको हमको चेंज करना है. तो इसका चेंज करने का क्या रूल है? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई minus 1 numerator denominator, it becomes minus 8 by 9. Now this is a standard form. Find the LCM. What is the LCM of 3 and 9? 9. 3 times 4 is 12. 1 times minus 8. 12 and minus 8. It will be 4 by 9. This is our second rational number. And this is our first rational number. Now we have to find one rational number between that two. So we have to find first rational number. Only one rational number. What is the formula? Half x plus y means minus 8 by 3 and plus 4 by 9. Okay, first rational number ऐसे निकलता है ना. Formula is half x plus y. प्रीवियस क्लास में बताए थे, जब भी रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो. नाउ फाइंड इट. हाफ एलसीएम इज 9. 3 टाइम्स minus 24 plus 1 times 4. It will be minus 20 by 9. 2 से कैंसिल होगा. It will be minus 10 by 9. Okay, 2 into 9 18. Okay, क्या है डिनोमिनेटर में 80 and 24 and 4 minus 20. Now it is divisible by 2, so minus 10 by 9. Okay, this is our rational number, one rational number between that two. This is question number 4, in which we have to verify the given expression. Okay, this is x divide y reciprocal is equal to x reciprocal division of y reciprocal. Okay, for x is equal to minus 5 by 11 and the y is equal to 7 by 3. This is given. So what is our left hand side? Left hand side is x divide y reciprocal. Means first of all हमें divide करना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका reciprocal करना है. So put the value. What is x? Minus 5 by 11 divide. What is y? 7 by 3 and the reciprocal. So we know about this expression. पहले बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग इसके ब्रैकेट का काम करेंगे. We have to do solve for bracket.
multiply. Division will be changed into multiplication. This is 3 by 7. So now this is minus 15 by 77 reciprocal. Do you know what I mean by reciprocal? Numerator will denominator and denominator becomes the numerator. 77 by minus 15. But this is not in a standard form. So we have to do it in a standard form. 77 by 50. This is our left hand side. Okay, remember it. Next one for right hand side. It's called right hand side. What is RHS? First of all, write the expression which is given in the right hand side. What is the expression? X inverse. X inverse divide Y inverse. Okay. So then find put the value of X in this expression. Minus 5 by 11 inverse divide Y 7 by 3 पावर -1 मीन्स रेसिप्रोकल. जब भी पावर -1 होता है किसी रेशनल नंबर को, उसको हम इनवर्स भी पढ़ते हैं. एंड इन द क्लास 7 दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल. पावर -1 सेम मीनिंग, मतलब क्या, इसको चेंज कर देगा. इट विल बी 11 by -5. इट विल बी 3 by 7. ओके, रेसिप्रोकल का काम खत्म. Next one is 11 by -5. Division will be changing to multiplication. Then it will be 7 by 3. Now, what is the result? 77 by -15. But this is not in a standard form. So, -1 से multiply करेंगे, it will comes -77 by 15. Okay? This is not in standard form, so multiply -1, it will be -27 by 15. Now what is left hand side and what is right hand side? Both are equal, so you can say left hand side is equal to right hand side. Okay, and in the last you have to write verified. Okay, you have to write verified. Next one is question number 5. Again we have to verify the following expression, following result. This is x plus y and the modulus. This is also called absolute value. Okay, class 7 में हम लोग absolute value पढ़े हैं. This is the sign of absolute value. This is less than and equal to. Okay, इस साइन को हम बोलेंगे. Okay, जैसे x y, बताओ which is smaller, छोटा कौन है? x is smaller. This is called x smaller than y. अगर इसमें हम ये साइन लगा दिए then it is called x is small and equal to y. Okay, x is small and equal to, here also x plus y and the modulus absolute value is smaller and equal to x absolute, y absolute and the addition of that. Okay, one by one पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड which is x plus y and the absolute. This is what is x? 2 by 3 plus y minus 3 by 5. Okay, this is the expression, our expression x plus y and the absolute value, sign of absolute. What is x? 2 by 3, y is minus 3 by 5. Find the LCM of 3 and 5. What is the LCM? 15. How many times? 5 times 5 into 2, 10. How many times? 3 times 3 into -3, that will be -9. Now tell me, 10 minus 9 addition है, so subtract होगा, it will be 1 by 15. It is positive, right? So the absolute value of positive is positive always, 1 by 15. Next one, right hand side.
what is our RHS? RHS modulus x. Okay, absolute value x या modulus of x plus as absolute value of y. Now put the value of x and y. 2 by 3 plus minus 3 by 5. Now tell me 2 by 3 is positive or negative? It is positive. So the absolute value of 2 by 3 is 2 by 3 plus next minus 3 by 5. Minus 3 by 5 is negative and the absolute value of negative rational number is also positive. It is 3 by 5. Now add them. What is the LCM of 3 and 5? 15 again. 3, 5 times 10, 3 times 9, it will be 19 by 15. This is our right hand side and this is our left hand side. Now tell me, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो रेशनल नंबर आया, दोनों में छोटा कौन है और कौन बड़ा है? ओके, यू हैव टू कंपेयर 1 by 15, 19 by 15. Now compare. Denominator are same denominator. Rational number having the same denominator, then the rational number whose numerator is greater. 19 is greater, that's why we can say this is greater. So इस साइड का ग्रेटर आया ना, so we can say x plus y right hand side is greater or equal to x plus. Okay, now tell me this is greater, equal to तो नहीं आया ना, फिर भी हम यहाँ equal to दे रहे हैं. Anyone जो बता सकता है कि x और y के कौन से वैल्यू के लिए इक्वल टू आएगा? जब आप x और y दोनों पॉजिटिव लोगे, व्हेन एक एग्जांपल लेके चेक करो, x और y बोथ पॉजिटिव, देन यू विल सी दैट this is equal to of right hand side. Okay, this is question number 5. In the next question, question number 6, we have to find the reciprocal of that two given rational number. Simplification. तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई करके एक रेशनल नंबर आएगा, फिर उसका हम लोग रेसिप्रोकल फाइंड कर देंगे. व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? एवरीवन नो अबाउट रेसिप्रोकल? ओके, numerator will be in denominator and denominator will be in numerator. Okay, simple. प्रोडक्ट कीजिए इसका. 2 into 3 6 minus 5 into minus 7 35 and 635. No any common factor. Negative नीचे नहीं है. This is a standard form. Now what is the reciprocal? Reciprocal सबसे इजी चीज है. Reciprocal means इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसको उल्टा है ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, इट विल बी जस्ट लाइक दैट. 6 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35. ओके, कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 -5, इट विल बी 20. 3 -8 24. Division by 4, 5 times, 6 times. Now we have to find the reciprocal. Again reciprocal का मतलब just like that. Okay, so reciprocal -6 numerator, 5 is in denominator. Okay, in the question number 7, we have to simplify only. Normally simplification करना है. This is subtraction, this is subtraction, but subtraction के बाद absolute value, here also absolute value, फिर उसके बाद जो भी बाहर निकलेगा उसको प्लस करना है. First of all subtract. What is the LCM? 21. Okay, 3 times 15, 7 times 14. What is the LCM?
14 and 7, it is 14. 1 times 3, 2 times 10. Okay, 15 minus 14, it is 1 by 21. 3 minus 10, minus 7 by 15. Right? 3 minus 7, 10 is minus 7. Now we have to find the absolute value of that two. It is 1 by 21. It is 7 by 14. Okay. What is the LCM again? 42. 21 2 is 42. 2 times 3 times 7 3 21. 23 by 42 is our simplification. Very simple. In question number 2, this is 5 by 11 and the reciprocal. The sign is -1, reverse, inverse. That is reciprocal. Means इसको reciprocal कर देंगे. It will be 11 by 5 minus 13 by 5 plus 3 by 15. Now simplification बहुत simple है. Find the LCM. What is the LCM? 5 by 15. It is 15. How many times? 3 times. 33 minus 5 से 3 times. 5 3 is 15. 3 into 13. 39 plus 3. Simple. Now 33 positive, 3 positive. Means 36 minus 39 by 15. It is minus 3 by 15. Okay. Both are divisible by 3. So minus 1 by 5. 3 5 by 15. 3 1 3. This is solution of question number 2. This is our question number 3. Multiplication and addition. 9 27. How many times? 3 times. So numerator is 3 times. 3 into 5 15 plus 7 by 30. Right? All simple. Now find the LCM 15 and 30. What is the LCM? 30. 2 times it will be minus 4. It will be 7. Now minus 4 plus 7. It is 3 by 30. How many times? 1 by 10. Understood? In this question, we have to find the reciprocal first of all. It will be minus 7 by 15 division reciprocal. This is 3 by 50. Okay, understood the reciprocal? So this is sign of reciprocal. Reciprocal जब होता है तो denominator becomes the numerator and numerator becomes the denominator. Now tell me about division. Division जब हमें करना है then इस साइन को हम प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे and the 3 by 50 को reciprocal कर देंगे means 50 by 3. Okay. Now 5 से divisible है 3 times, right? And it will be 10 times. Minus 7 into 10 minus 70. 3 into 3 9. So our answer is minus 70 upon 9. In the next question, we have to divide. Divide करना है दो रेशनल नंबर को. लेकिन first is the sum and the second one is difference. तो दो रेशनल नंबर का पहले हम sum find करेंगे. We have to find the sum. किसका? 5 by 21 plus 4 by 7. Now tell me about the sum. Sum find करने के लिए LCM find करना होगा. We have to find the LCM. 21 5 3 times 4 3 is 12. It will be 17 by 21. Next one, we have to also find the difference. Okay. Difference means what? Difference means बड़ा में से छोटा को subtract करना. Because difference is always positive, right? तो which is greater? In that two, 7 into 5 35, 21 into 4
84. So we know that this is greater. तो जब भी डिफरेंस निकालना होगा तो आप सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा. मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4/7 minus 5/21. What is the LCM? Again 21. 7 से 3 times. 4 into 3 12. Right? 21 5. 12 minus 5. What is 12 minus 5? 7. 7/21. Now it will be 1 by limit. छोड़ दो इसको, बाद में इसको सॉल्व करेंगे. राइट. Now we have to divide that two rational numbers. Divide the sum of them by. तो divide हमें करना है sum से. तो what is sum? 17/21 divide किससे? Difference. Divide sum of इतना by their difference. Now tell me about division. 17/21 division will be changed into product when 7/21 reciprocal हो जाएगा. So this has been cancelled. What is our result? 17/7 is our answer. Understood? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. सबसे पहले हमें सम करना है. सम मीन्स एडिशन. देन डिफरेंस करना है. डिफरेंस में कंफ्यूजन है कि दिस माइनस दिस या 4/7 माइनस दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक जो बड़ा है. तो बड़ा कंपेयर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे. 7 into 5 35. 21 into 4 84. सो दिस इज ग्रेटर. 4/7 में से घटाना है. सब्ट्रैक्शन आ गया. अब डिवाइड करना है किससे? सम को डिफरेंस से. डिफरेंस रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ सिंपली दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन. अगेन डिवीजन, बट वी हैव टू डिवाइड बाय द डिफरेंस by their product. Means we have to find the difference. Now again we have to find the difference first. difference कैसे निकलता है? बड़ा माइनस स्मॉलर वन. which is greater? 12/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है -16/20. राइट. याद रखिएगा हमेशा बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है. ओके. नाउ I think it is divisible 4 times 5 times. Okay, so 12/5, break the bracket, minus minus, it will be plus 4/5. Now solve this. What is the LCM? 5. It is 12 plus 4. This is 16/5. This is our difference. Okay, now we have to find the product. Next one is product. प्रोडक्ट फाइंड करो. we have to find the product of that two. Then 12/5 product of -16/20. Okay, how many times? 4 5. 12 into 4 48. 5 into 5 25. Now we have to divide difference by their product. Means first of all divide में सबसे पहले हम difference को लिखेंगे. 16/5 divide by -48/25. Now simply solve this. You can solve it yourself. 16/5 product of 25 by -48. How many times? 3 times. 5/-3. Okay, 5/-3 will be also written as -5/3. This is our answer. Okay, अगर आपका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है तो भी यही करेक्ट है. -5/3
is your right answer. Okay. In the next question, we have to find the reciprocal of this. We have to find the reciprocal. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना होगा इसे. इस सिंप्लीफिकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कीजिए. एक छोटा सा रेशनल नंबर आएगा, उसको रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, राइट. सो -2/3 into 5/7. Bodmas के रूल अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व डिवीजन. 2/9 प्रोडक्ट ऑफ 3/1. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे व्हेन द सेकंड विल बी द रेसिप्रोकल into 6/7. Now find the product. -2 into 5 -10/21 plus. Now it is divisible. 3 times. 3 2 times. It will be 2 into 2, 4/7, right? Now what is the LCM? 21. This is -10 plus 7 3 times. 3 into 4, 12. This is 2/21. Now we have to find the reciprocal of 2/21. So what is our reciprocal? Reciprocal. It is 21/2. Right? This is our reciprocal, and this is the last question of brain teasers. You must have to solve Hort's enrichment and value based also. अगर आपसे solve नहीं होगा, we will give you the solution. Okay, but first of all try yourself.